assistant returning officers in all the state capitals, including NCT of Delhi and Union Territory of Pondicherry. And this is for making all the arrangements for conducting the poll and for transporting ballot boxes from Delhi to the state capitals, where the voting will take place at the designated places, and also to bring back those ballot boxes. If in case the AROs are not, for some reason, fall ill or something, the Commission has also appointed the second assistant returning officers and will be distributing you a book in the form of a press note. What I am reading is available. This will be also uploaded. Appendix to this book gives you all the details of the ROs, AROs, their names, their phone numbers, everything. Now, coming to the place of voting, as per Rule 7 of the Presidential and Vice Presidential Election Rule 74, poll for the election will be taken in Parliament House and in the premises of the state legislative assemblies, including the legislative assemblies of NCT of Delhi and Pondicherry, and the rule provides where legislative assembly meets for transaction of business. So this is what is provided in the rule itself, and the polling is required, if required, shall take place in these places, and the list of these polling stations is also given in the appendix 2 of the book I just showed you. Now I come to the value of the votes. Value of the votes of the elected members of the state legislative assemblies combined is 5,43,231. And similarly, of all the MPs combined, it is all these slides would also be given to you. I suppose they must be already tweeted and must be with you on your system. So the states is 5,43,231. MPs is 5,43,200. So almost equal. And total is 10,86,431. While the electoral college consists of MPs, who are 776, and MLAs of the entire country, who are 4,033, totaling to the voter list of 4809. So that's what is the total number. Now I come to the nomination papers. The nomination paper of a candidate has to be delivered only at Delhi, an office designated by the RO. Or nomination ke, and it cannot be at any other place, it has to be only at Delhi. Nomination में proposer के रूप में कम से कम 50 proposers, 50 members of the electoral college will propose, and another set of 50 will second. They would be not common, new. So one set for proposing and one set for seconding. And an elector can subscribe to only one nomination paper of a candidate as either a proposer or a seconder. अभ्यर्थी स्वयं इसको फाइल कर सकते हैं नॉमिनेशन को, या अपने किसी प्रपोजर या सेकेंडर के द्वारा 11 o'clock से 3 o'clock तक एक्सेप्ट हॉलीडेज फाइल कर सकते हैं. एंड एज पर द प्रोसीजर देयर इज ए सिक्योरिटी ऑफ 15,000 rupees which has to be filled. There are designated treasuries, there is an RBI office, what is all provided in the booklet. This is for more for the candidates, this can be deposited. Now, coming to the electoral college again, as per Rule 40 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, the Commission maintains a list of members of the electoral college as referred to in Article 54 with their correct up-to-date address and for the purposes of presidential elections. A copy of the electoral college is also being uploaded on the Commission's website. So anybody can see who is the member state-wise. That is all on the Commission's website. We will be posting it. And there are certain, in this list, we will require to update it because there are elections which are taking place for the Rajya Sabha to the 55 positions, result of whom is coming before the presidential elections date. It is similarly the voter list
would be updated as and when the term of these MPs happen, and they will be part of the voter list. Similarly, in legislative assemblies also, wherever there are by-elections, and if the results come before the date of voting, their names would also be added in the voter list as a supplementary list, and all of that will also be put on the website of the Commission. Further, this voter list is also available if anybody wants to keep it as a record for ₹300 at our counter, which is set up in our commission, but it's available on our website as well. As regards the date of polling, candidate can authorize a representative to be present at the time of polling and at the place fixed for counting. Or this has to be informed to us in advance so that the representative can be approved. About the place of voting for the MPs and MLAs. Normally, MPs are expected to cast their votes at the place of polling in the Parliament House, New Delhi. And similarly, members of the state legislative assemblies are also expected to cast their vote in the respective assemblies. However, if there is an emergency or there is some requirement, prior approval से voting location, किसी भी voting location पर MPs and MLAs दूसरी अपने वोट को डाल सकते हैं, बट इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले आयोग को सूचना देनी पड़ेगी ताकि उनके वोट की व्यवस्था उस चेंज स्थान पे की जा सके. तो as I mentioned earlier, the Constitution has expressly provided that election to the office of President shall be by secret ballot. The electors are therefore expected to scrupulously maintain secrecy of vote. In this election, there is no, what you call the display of the vote at all. It is to be secret. There is no concept of open voting in this election, and showing the ballot to anyone under any circumstances will render the vote invalid. So the process is that after you have taken the ballot paper, you mark it in the compartment, fold it, and mark it with the pen, as I mentioned, which we have provided. Marking it by any other pen would also make it invalid. About the whips, it is also clarified that political parties cannot issue any whip to their MPs and MLAs in the matter of voting in the presidential election. There is no whip which is permissible in this election. As per Section 18 of the President and Vice President Election Act rules, the offence of bribery or undue influence in any manner, as defined in Section 171B and 171C of the IPC, by the returned candidate or any person with the consent of the returned candidate, are among the grounds on which the election can be held invalid by the Honorable Supreme Court in an election petition. So, there is no way that any influence or any inducement or any case of undue influence which must be totally avoided. Otherwise, it's a ground for petition. तो दोबारा से सारांश में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एमपीज और एमएलएस का कोई व्हिप इशू नहीं कर सकेंगे, और चूंकि ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्राइम की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन ग्राउंड्स पर इलेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द भी किया जा सकता है. Our COs in the states will supervise the arrangements and the election, as I mentioned earlier. Now we come to the COVID. Fortunately, it's not as an issue as it was, but still the Commission has decided to maintain every protocol as applicable in the respective states. The entire, on the day of polling and on the day of counting, the entire protocol would be followed. It has also been Commission's endeavour to make elections eco-friendly. This is our responsibility. And in view of the importance of this election and the fact that lawmakers constitute the Electoral College,
and to reinforce criticality of environmental protection measures in policy and action, the Commission has directed the returning officers and assistant returning officers concerned to ensure use of eco-friendly and biodegradable material and eliminate the use of prohibited plastic material altogether. चुनावों को इको फ्रेंडली बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल की बजाय टोटली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करने का निर्देश कमीशन ने सभी को दिया है. Coming to the counting of votes will be held in New Delhi under the supervision of the returning officer, who happens to be the Secretary General of the Rajya Sabha. And on completion of the counting, the return of election in form number 7, as appended in the rules, will be signed and issued by the returning officer. So I have already stated that this press note booklet is available also, and this is copies are kept outside, but this is also available if anybody wants from our office as well. There are number of questions which are raised about this election. So we have also prepared a frequently asked questions FAQs. There are 35 questions which also we are uploading immediately after this. So I am sure that replies to whatever is in your mind would be available here. But anyway, if you want to ask anything, now in the end, in pursuance of the subsection 1 of section 4 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, the Election Commission of India has fixed the schedule for the election to fill the office of the President of India as given in Appendix 3, and which I am reading out to you now. Can we put it on the... I was waiting for you to announce it, sir. So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022, that happens to be Monday. Thereafter we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. Thank you. We'll take your questions now. I'll again request you, पूछने के पहले कृपया अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन बोलें. हम सबका क्वेश्चन ले पाएंगे. कृपया जल्दी ना करें, एक एक करके पूछें, सबको सहूलियत होगी. I'll begin from first row then. हेलो सर, गुड इवनिंग. मोहित दुबे, न्यूज नेशन से बोल रहा हूँ. आपने तारीखों का ऐलान कर दिया, पूरी सूची आपने जारी कर दी. सवाल लगातार निष्पक्षता को लेकर उठता रहा है. रिजॉर्ट जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है या हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एक निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठता है, विधायकों को लेकर उठता है. क्या उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म आप लोगों ने बनाया है ताकि विधायकों पर नजर रखी जा सके और निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाया जा सके? जैसे मैंने आपको अभी अपने संबोधन में बताया, इसमें 3-4 चीजें हैं. नंबर 1, ये पूर्णतः सीक्रेट बैलेट है. कोई भी इलेक्टर अगर बैलेट को दिखाएंगे तो वो बैलेट ऑटोमेटिकली उस दिन पर कैंसिल हो जाएगा. दूसरा, पेन की एक व्यवस्था मैंने आपको बताई. ये पुराने इंस्टेंसेस जैसे भी हो चुके हैं, तो वो पेन वही इस्तेमाल करेंगे जो कि कमीशन उनको प्रोवाइड करेगा. अगर कोई भी पेन दूसरा इस्तेमाल हुआ तो वो काउंटिंग के समय में कैंसिल हो जाएगा. थर्डली, हर स्टेट में कमीशन एक सीनियर ऑब्जर्वर को अपॉइंट करेगा, जस्ट टू कीप वॉच ऑन दिस. ये हमने एक लिस्ट बनाई है जो बहुत ही वरीय एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको हम पोस्ट करेंगे हर स्टेट में, और हमारी ट्रेनिंग उनके लिए शुरू होने वाली है तुरंत ही 1-2 दिन में. वेयर विल बी एम्फेसाइजिंग ऑन दीज पॉइंट्स. और कमीशन का कंबाइंड, पूरे कमीशन का ये रिजॉल्व है
कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस इस सबसे बड़े ऑफिस के चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, और वो अगर होती है और इस तरीके की कोई भी इंस्टेंस सामने आती है, इट विल ऑल बी वीडियोग्राफ्ड ऑल्सो। अगर इस तरह की कोई इंस्टेंस सामने आती है तो दैट इटसेल्फ, एज आई मेंशन, इज ए ग्राउंड फॉर एन ईपी एंड इवन ए कैंसिलेशन ऑफ द इलेक्शन। नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। एक सांसदों के वोट का मूल्य क्या होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है तो इसलिए सांसदों के वोट का मूल्य घटा है। दूसरा सवाल स्पेसिफिक है, कल राज्यसभा के चुनाव है, राज्यसभा में जो लोग जीत कर आएंगे वो भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे। कल 4 राज्यों में जहां वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव के लिए, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, खरीद फरोख्त ना हो, क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग की नजर कैसे इन चारों राज्यों पर लगी हुई है, ये जानना चाहेंगे। आपके प्रश्न के 2 पक्ष हैं। पहला कि एमपीज के वोट की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू है 700 पर एमपी। दिस वाज 708. It has been changing in all the elections, sometimes 702, sometimes 708, this time it will be 700. So this is one part. दूसरा पक्ष आपने कहा कि जो राज्यसभा के चुनाव के बारे में, तो ये मैं पहले ही आपको अपने संबोधन में बता चुका हूं कि 55 सीट्स पर राज्यसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें से सिर्फ 4 जगह बची हैं जहां पर कि चुनाव होना है, वहां से बाकी अनकंटेस्टेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। कल हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में राज्यसभा का चुनाव है। हमने चारों जगह में स्पेशल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं और पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी चुनाव जिनका भी टर्म खत्म हो रहा है राष्ट्रपति जी के चुनाव के डेट से पहले, उन सब का नाम इलेक्टोरल लिस्ट में ऐड होके सप्लीमेंट्री लिस्ट जिस दिन पर डेट खत्म हो रही है उसी दिन के हिसाब से सप्लीमेंट्री डेट्स इशू होंगी और उनको हम अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे। एंड देन इट वुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी टू सी द डे द डेट कम्स व्हेन दे आर काइंड ऑफ the vacancies happening on that particular. राजू जी, सर संजय शर्मा हूं इंडिया न्यूज चैनल से। मेरा सवाल है सर, क्या सभी प्रदेशों के विधायकों के वोट समान होंगे या किसी स्टेट के विधायकों के वोट अलग अलग होंगे? क्या सबसे ज्यादा किसी स्टेट के विधायकों के वोटों की कीमत अलग होगी, वैल्यू अलग होगी, और सबसे ज्यादा किस स्टेट की होगी और सबसे कम किस स्टेट के विधायक की वैल्यू होगी? सर देखिए, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इसका मैंने एक अपेंडिक्स है जो अभी आपको किताब बाहर भी आप ले सकते हैं, ये अपेंडिक्स है। तो दिस इज अपेंडिक्स नंबर 1। तो जो मैंने आपको बताया था कि एमएलएस की टोटल वोट्स की संख्या है 5,43,231। उसमें किसके कितने वोट की वैल्यू है वो स्टेट वाइज आपको दी हुई है, कितने उसमें एमएलए गण हैं और कितने उनकी वोट की वैल्यू है वो दी हुई है। अब प्रश्न उठता है ये किस प्रकार से कैलकुलेट होगी। तो आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप किस प्रकार से उनके वोट की वैल्यू निर्धारित करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला भी हमने इसमें दिया हुआ है, आप उसे देखें, और एफएक्यूज में भी हमने दिया हुआ है जनसंख्या के, और वो जनसंख्या के आधार पर होता है। डिटेल्ड फॉर्मूला है, वो आप इसमें पढ़ें और पूरा हमने दिया हुआ है। अगर फिर भी कोई आपके मन में शंका रह जाएगी तो विल आंसर। सर, it will take longer time to explain to you, but it is exactly as provided in the constitution about the vote and on the basis of the census which it mentions. हाँ, राजीव सर नमस्कार, मैं संतोष ठाकुर हूँ नवभारत से। धर्मेंद्र सर नमस्कार। मैं सर आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने बोला कि